मदर टेरेसा, ये नाम सुन के आपको क्या याद आता है? That works of mercy and compassion can of themselves be works of peace, and that the peace she brings transcends all politics. Mother Teresa, to me, an icon of compassionate care for the poor and the disadvantaged. I am living life because of Mother Teresa. When I was thirsty, you gave me to drink. When I was naked, you clothed me. Mother Teresa, these are words which we would all agree with. Actually, doing this close contact with the poorest of the poor. क्या मदर टेरेसा सच्ची में सेंट थी जैसे लोग उन्हें सोचते थे? Mother Teresa was baptized Agnes Gonja Boyajiu in Skopje, Macedonia around August 26, 1910. और जैसे ही वो 18 साल की हुई, उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नाम के कॉन्वेंट को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने उधर ही अपना नाम बदल के टेरेसा रख दिया। The reasons some religious members take on new names. They have a favorite saint or they have someone who embodies for them. 1929 में जब वो इंडिया आई, तब इंडिया अपने बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा था। The fact that what she does on the streets of Calcutta is really irrelevant to them. They couldn't care about it. Most of them don't even know. But Mother Teresa is the sort of figure you show to visitors. Right from the very beginning, I wanted to serve the poor purely for the love of God. उन्होंने अपनी जिंदगी इन बच्चों के नाम कर दी। 1946, a second calling from Christ led Mother Teresa to leave her convent and devote herself to working with the poorest of the poor. And people who have been forgotten, who have left alone, who are lonely, who feel unwanted, unloved. I think that's a very great poverty and more difficult to remove, to satisfy that hunger for love. उनकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक घर जैसी थी उनके लिए जिनका कोई नहीं था, और उनकी इन्हीं सारी चैरिटेबल वर्क की वजह से उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली। 1979, the Royal Swedish Academy awarded the Nobel Prize for Peace to Mother Teresa. पूरी दुनिया उन्हें एक सेंट मानती थी, एक सिंबल ऑफ सेल्फलेस सर्विस, जो अपने से पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचती थी। लेकिन इस सेल्फलेस सर्विस के पीछे क्या कोई सेल्फिश मोटिव भी था जो लोग नहीं जानते थे? Used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it, and she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilizing it? Why are you not boiling water and sterilizing your needles? She says, there's no point. There's no time. Man was brought here in the early hours of the morning. He's in pain, but his condition is only treated with some oxygen. When people come from the West, they think it's vast. There was thousands and thousands of people. It's got less than 100 places. Teresa's time, the care was abysmal and quite cruel. और यही नहीं, कुछ टाइम बाद मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पे भी सवाल उठने लगे। She never published her accounts. She took money from anybody and everybody. You probably know that she accepted loads of money from Charles Keating, who was the biggest American fraudster until then. ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, और ऐसे क्रिटिसिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। I had only to change, so to say, the way of work, the means I had to change to work for the poorest of the poor. मदर टेरेसा का काम चालू हुआ तभी अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत कम थे और उनका फोकस बेसिक केयर प्रोवाइड करने में था। All over this unhappy globe, there are heroic volunteers putting up a selfless battle on behalf of the wretched of the earth. और उनकी यही बेसिक केयर वाली स्ट्रेटेजी डेस्परेट सिचुएशंस में काम भी करती थी। Woman whose worldwide symbol for goodness and holiness. In recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. मदर टेरेसा के ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा था और यही भरोसा उनकी ताकत बनी। It's like you're actually seeing a living saint. Our organization doesn't make any effort to convince someone for a Christian to become a Christian or something like this. We don't do it. इनकी लेगेसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन ये फैक्ट भी सच है कि उनकी हेल्प से बहुत सारे लोगों को नेसेसरी कंफर्ट मिले। She also opened schools, children's homes, and leprosariums. क्रिटिक्स लोगों का कहना भी सही है कि मदर टेरेसा का मोटिव अच्छा है, लेकिन उनके मेथड्स नहीं।
work she did in India really challenged entrenched notions of caste and gender roles, and she worked very closely with lepers and other people who were disenfranchised, marginalized. अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन में, क्या वो एक सेंट थी जो दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए आई थी, या फिर कोई ऐसी पब्लिक फिगर जिनके मेथड्स टाइम के साथ एडेप्ट नहीं हो पाए? She recognizes their spiritual dignity. She takes care of not just their spiritual needs, but their bodily needs as well. Who has forsaken her life, for sacrifice herself for the people of the third world. It makes the West feel better, This is one of us again, once again rescuing. मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस के जवाब इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। मदर टेरेसा का स्टोरी लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि सबसे फेमस पब्लिक फिगर्स में भी अपने फ्लॉज हो सकते हैं। Lord, make me a channel of your peace. Where there is hatred, may I bring love. Where there is discord, may I bring harmony. Where there is error, may I bring truth. असली चैरिटी का मतलब क्या है और हम कैसे उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो सच्ची में नीड में हो? ऐसे क्वेश्चंस हमें हमेशा अपने से पूछना चाहिए और हमें एक अच्छी दुनिया बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus and the distressing disguise of the poor. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले ज़रा सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।